Hello friends, welcome back to my channel Techno Education Academy. In this video lecture, we will discuss a basic MCQ of computer engineering which is generally asked in all types of competitive exam. Let us start with question number 1. Keyboard keys that have arrows on them are called. कीबोर्ड के जिन बटनों पर तीर का निशान होता है उसे हम क्या कहते हैं? This is called function keys, navigation keys, typewriter keys and special purpose keys. So as we know that on a computer keyboard these types of keys are there. It is called navigation key. So the right answer is option B. Question number 2. The keyboard keys like caps lock that turn on features on or off are called. कैप्स लॉक जैसे किसी फीचर को शुरू या बंद करने वाले बटन को हम क्या कहते हैं? इट इज कॉल्ड फंक्शन कीज, कॉम्बिनेशन कीज, टॉगल कीज और स्पेशल पर्पस कीज. So here you can see that this is a caps lock key on a keyboard. It is called toggle keys. So the right answer is option C. Question number 3. Which is the language used in the internet? इंटरनेट में प्रयुक्त होने वाली लैंग्वेज कौन सी है? जावा, सी, सी प्लस प्लस, नन ऑफ दिस. सो इंटरनेट में हम जावा का यूज करते हैं. सो जावा इज यूज एज अ लैंग्वेज यूज इन द इंटरनेट. क्वेश्चन नंबर 4. विच कंपनी हैज डेवलप्ड द जावा लैंग्वेज यूज इन कंप्यूटर्स? Google, Microsoft, Oracle and Apple. So the right answer is Oracle. Oracle has developed the Java language. It is used in computer. Question number 5. The easiest way to access any part of the screen in the Windows operating system is using the dash, keyboard, rat, mouse and joystick. So the right answer is mouse. By using the mouse we can access any part of the screen in the Windows operating system in easiest way. So the right answer is option C, mouse. Question number 6. Who created the C language? C भाषा को किसने बनाया है? ऑप्शन ए चार्ल्स बेबेज, ऑप्शन बी स्टीव जॉब्स, ऑप्शन सी डेनिस रिट्ची, ऑप्शन डी Ken Thompson. So the right answer is option C, Dennis Ritchie, जिसने C लैंग्वेज को बनाया है. Question number 7. Who is mainly connected in parallel port? Parallel port में मुख्यतः किसे कनेक्ट करते हैं? Joystick, printer, mouse and monitor. So the right answer is option B, printer. प्रिंटर को हम पैरेलल पोर्ट में कनेक्ट करते हैं. सो द राइट आंसर इज ऑप्शन बी. क्वेश्चन नंबर 8. व्हाट वाज द ओल्ड नेम ऑफ फेसबुक? फेसबुक का पुराना नाम क्या था? वेचेट, फेसरूम, फेसटॉप, फेसमैश. सो द राइट आंसर इज ऑप्शन डी, फेसमैश, जो फेसबुक का पुराना नाम था. So FaceMesh was the old name of Facebook. Question number 9. What is the geographical arrangement of connecting computers in a network is called? नेटवर्क में कंप्यूटरों को जोड़ने की भौगोलिक व्यवस्था को क्या कहा जाता है? टोपोलॉजी, कनेक्टिविटी, LAN and none of these. So the geographical arrangement of connecting the computer in a network, it is called topology. So the right answer is option A. Question number 10. How many layers are there in OSI model? OSI model में कितने layers होते हैं? 5, 6, 7, 9. So the right answer is option 7 and this is the full form of OSI model. Question number 11. Which of the following is the biggest unit of memory? इनमें से कौन सी मेमोरी की सबसे बड़ी यूनिट है? गीगाबाइट, बाइट, मेगाबाइट एंड किलोबाइट. सो
kilobyte means 10 raised to 3, megabyte means 10 raised to 6, and gigabyte means 10 raised to 9 byte. So the big unit is gigabyte. So the right answer is option A, gigabyte. Question number 12. Dash is a pointing device. इनमें से कौन सी पॉइंटिंग डिवाइस है? माउस, प्रिंटर, स्कैनर एंड कीबोर्ड. So as we know that mouse is a pointing device, so the right answer is option A. Question number 13. The primary purpose of software is to turn data into dash. सॉफ्टवेयर का प्राथमिक उद्देश्य डेटा को किसमें परिवर्तित करना है? So the primary purpose of software is to turn data into information. It is the right answer, B. Question number 14. The keyboard keys that are labeled F1, F2 and so on are called. कीबोर्ड के जिन बटनों पर F1, F2 आदि लिखा होता है उनको डैश कहते हैं. उसको हम फंक्शन की कहते हैं, टाइपराइटर कीज, न्यूमेरिकल कीज, और वी कैन से न्यूमेरिक कीज, स्पेशल पर्पस की. सो द राइट आंसर इज ऑप्शन ए. इट इज कॉल्ड फंक्शन कीज. तो यहाँ पे आप देख सकते हो F1, F2, F3 to F12. These are the function keys. Question number 15. Utility identifies unnecessary files on the hard disk and erase them based on user's command. Backup, uninstall programs, file compression and disk cleanup. So the utility identifies unnecessary files on the hard disk and erase them. It is called disk cleanup command. Okay, user command, it's a disk cleanup. So the right answer is option D. Question number 16. Microprocessor is often called as CPU. माइक्रोप्रोसेसर को प्रायः CPU भी कहा जाता है. It's a true or false? So it's a true. Microprocessor is often called as CPU. Question number 17. This type of software is designed to help you be more productive task and is widely used in nearly every discipline and occupation. इस तरह के जो सॉफ्टवेयर की संरचना आपके काम को अधिक सुविधाजनक बनाने के लिए की गई है, जिसका उपयोग व्यवसायों में विस्तृत रूप से किया जाता है, उसे हम क्या कहते हैं? कम्युनिकेशन सॉफ्टवेयर, यूटिलिटी सॉफ्टवेयर, बेसिक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर एंड सिस्टम सॉफ्टवेयर. उसे हम कहते हैं बेसिक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर. So the right answer is option C. Question number 18. Mini computers are also known as. मिनी कंप्यूटर्स को निम्न नाम से भी जाना जाता है. ऑप्शन ए मिड रेंज कंप्यूटर्स, ऑप्शन बी पर्सनल डिजिटल, ऑप्शन सी मेन फ्रेम कंप्यूटर्स, ऑप्शन डी लैपटॉप कंप्यूटर्स. So mini computers are also known as mid-range computers. So the right answer is option A. Question number 19. Which of the following would not be considered as portable computer? इनमें से किसको पोर्टेबल कंप्यूटर नहीं माना जा सकता? डेस्कटॉप कंप्यूटर, पर्सनल डिजिटल असिस्टेंट, नोटबुक कंप्यूटर, ऑप्शन डी none of these. So as we know that desktop computer, okay, it is not portable. So this is the right answer. Option A, desktop computer would not be considered as portable computer. Question number 20. Headphone is a typical output device. Headphone एक आउटपुट उपकरण है. True or false? So headphone is a typical output device. So the right answer is option A. So guys, thank you very much for giving your valuable time. I hope this content it will be helpful to you. If you would like to watch this type of more content videos, then please subscribe our channel and also share with your friends. Thank you friends.